Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well. Let's start our today's physics lecture. Chapter number 13 sound, and the topic is numericals, and the diary is to practice of the numericals from 13.1 to 13.6. First of all, before starting the numericals, we have to see the formulas that will be used in our numericals. First one is the wave formula या wave equation. V is equals to F lambda. Similarly, we can also change this formula for the frequency. F is equals to V over lambda. And then the another formula, S is equals to Vt over 2. That is a formula that is used in the ultrasound topic. We can find out the depth by using this formula. T is equals to 1 over F. Similarly, the F is equals to 1 over T, and the frequency is also equals to N over T. N is the number of the vibrations or oscillation divided by the time. यहाँ पे सारी टर्म्स बता दी गई हैं. वी वेव स्पीड है और उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है. फिर एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, उसका यूनिट हर्ट्ज है. और लैम्डा वेव लेंथ है, उसका यूनिट मीटर है. इसी तरह एस यूज हुआ है, दैट इज अ डिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज मीटर. कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, यूनिट इज एस, एंड द स्मॉल टी इज जस्ट अ टाइम, not a time period. N is the number of vibration which doesn't have any unit because it is a number, it is a quantity. Numerical 13.1. The data is given. V is equals to 333 meter per second and the lambda यानी wavelength is equals to 3 centimeter. सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे मीटर के लिए. फॉर दिस वी हैव टू डिवाइड द 3 बाई 100. 3 को 100 पे डिवाइड करने से सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में. दैट विल बी इक्वल्स टू 0.03. To find, we have to find out the frequency in this formula. For this, the formula V is equals to F lambda and the frequency equal to V over lambda. तो V over lambda को डिवाइड करने से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी. दैट इज द 1110 hertz. We can also use this. We can also write it by using the some prefixes. That is a kilo. Kilo is equals to 1000. So that will be changed into 11.1 kilohertz. Result: the as audible range is 20 to 20,000 hertz. So the frequency is 11.1 kilohertz. That is audible frequency. क्योंकि इस न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ये भी पूछा गया था कि ये फ्रीक्वेंसी हमारे लिए ऑडिएबल है या नहीं. तो हमें ऑडिएबल की रेंज पता है 20 से 20,000 हर्ट्ज और हमारी 11 किलो हर्ट्ज तक आई हुई है. तो दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज ऑडिएबल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 13.2. गिवन डाटा इज द नंबर ऑफ क्लॉक चिम्स इन इक्वल एन इज इक्वल टू 48 यानी नंबर ऑफ क्लॉक चिम्स बता दी है. टाइम टोटल टाइम गिवन है 60 सेकेंड एंड टू फाइंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड थी. फॉर्मूला for frequency we use the n over t. N is the number of oscillation, number of clock chimes divided by t, and the for time period formula is equals to 1 over f. तो frequency के लिए हम 48 को divide करेंगे 60 पे and we will get the value of the frequency, that is a 0.8 hertz. For time period we have to divide the frequency by 1 over 0.8 and we will get the value of the time period, that is a 1.25 seconds. So the result is required frequency is 0.8 hertz and the time period is 1.25 seconds. Now move to the next numericals 13.3. Given data, wavelength and velocity are given. Wavelength is represented by lambda and the velocity is denoted by small v. To find, we have to find out the frequency. The same formula will be used here. F is equals to v over lambda as we have used in the numerical number 1. V और lambda दोनों को डिवाइड करेंगे and we will get the value of the frequency, that is a 680 hertz. The result is required frequency is 680 hertz. Move to the next 13.4. Given data, velocity and wavelength is given the same as before. We have to calculate the time period here. We cannot find the time period directly by using the V and lambda. For this we have to calculate the frequency first and then dividing the frequency by 1 we can easily calculate the value of the time period. फ्रीक्वेंसी के लिए वी और लैम्डा दोनों को डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ 250 हर्ट्ज. टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए 250 को हम डिवाइड कर देंगे 1 पे. 1 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू द टाइम पीरियड, दैट इज अ 0.004 सेकेंड. Result: required time period is 0.004 second. Now move to the next numerical 13.5. Given data, eco time बता दिया गया, that is not a time period, just a time. T is equals to the 2 second and the velocity is 1600 meter per second. To find depth, depth is represented by s and its unit will be meter. Formula s is equals to vt and divided by 2. The 2 is used here because the depth, to calculate the depth we have to divide the total value of the distance by 2.
क्योंकि हमारी अल्ट्रासाउंड्स में भी हमने देखा था ट्रांसमिशन या सी बेड में जब हमारी अल्ट्रासाउंड्स गई थी तो वो ट्रांसमिट हुई थी और दोबारा रिसीवर ने रिसीव की थी, वो टू काउंट्स हुई थी उनके डिस्टेंस को। तो अगर आपने टोटल उसका टाइम फाइंड आउट करना है, टोटल डेप्थ फाइंड करनी है, तो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे 2 पे। तो that is the formula, and for solution s is equals to 1600 multiplied by 2 and this term will divided by 2, तो डिवाइड करके हमारे पास सेम आंसर आ जाता है 1600 मीटर। द रिक्वायर्ड डेप्थ इज 1600 मीटर। 13.6 numerical, that is the last numerical. Given data, echo time 6 centimeter and the velocity is 343 meter per second. To find distance has to be calculated in this formula, same as before. For this the formula S is equals to Vt divided by 2, solution Vot को multiply करके 2 पे divide करेंगे and we will get the 1029 meter. Required distance is 1029 meter. यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। होप सो गर्ल्स की ऑल न्यूमेरिकल्स क्लियर हैं एंड यू हैव टू नोट डाउन ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑन योर नोटबुक। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।